So there was a person who was driving a car, okay, very nicely. And in US and all, you have to follow all the traffic rules. So very nicely, he will drive from one side of the road. When a signal will come, वहाँ पर रुक जाएगा, and then he will again go. And if someone comes in between, then again he will have to balance the car so that he will brake. And if he goes out of the line, there will be some lanes in US, so you have to drive in that lane only. So if he goes some outside lane, again he will come back. So nicely he's doing everything. But then if someone, a person was following that person was driving car, and then when the car came and stopped on the signal, then he asked that, yeah, where are you going? He asked like that. So that person said that I have no idea where I'm going. So what do you think about this person? It is foolishness, right? He's driving everything nicely and don't know where he is going. You know? So you have to the main thing from this is our goal. Okay, our goal should be that we should be happy at the end of the day. Okay, and that happiness will come when you connect yourself with God, when you re-establish your relationship with God, with Krishna. Okay, that is the goal. So for reaching towards that goal, we need to balance our life. Our body is made up of matter. In some future sessions we will get कि body किस किस element से बना है, how body कैसे बना है, सब detail में Vedic scriptures में क्या क्या बोला गया है उसके बारे में. All these things we'll discuss in future sessions. But for now, body is made up of matter, and our soul is the spirit, and you are the soul. We are the soul, right? We are not this body. We are soul. So we have to balance both of this, and to balance both of this, we need to have some livelihood. We should have some job. Yes or no? कुछ काम होना चाहिए, but we can put it together. So that's why you have to balance and go. So that was the answer for this boy. ऑनलाइन डिवोटीज, आप लोग को मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या? टेबल पे नहीं, ईयरफोन है. हेडफोन. यस प्रभु. हाँ, उनमें से एक ने मैसेज किया फुल स्क्रीन. यस प्रभु. ओके, फुल स्क्रीन शेयर करना है क्या? I have some problem in my computer. Sometimes आवाज आता नहीं. Okay, so that is what I told about balancing. So one person asked Srila Prabhupada that we are now just very young. We are 20 years old. When he went to US and when he preached over there, so we are just very young now. So isn't it too early that we're taking up to spirituality? When Prabhupada said no, you're already very late, because you know Prahlad Maharaj, right? Hiranyakashipu and Prahlad, maybe you might have heard. So in Srimad Bhagavatam, 7th canto, Prahlad Maharaj says that our lifespan in Kali Yuga is only 100 years. Okay, 4 युग रहते हैं. Your news, so I am telling you all. Others here, they know these things. So 4 युग रहते हैं. सबसे पहले सत्ययुग होता है, जिसमें प्रहलाद महाराज थे, हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज. सेकंड होता है त्रेता युग, जिसमें राम भगवान आए. फिर होता है द्वापर, जिसमें कृष्ण भगवान आए. और लास्ट है कलयुग, हम लोग के गिरे हुए लोगों के लिए. ओके, सो एवरी युग द लाइफ स्पैन विल डिक्रीज. लाइक कलयुग में सत्ययुग में लाइफ स्पैन था अराउंड 1 लाख years. Then when it will decrease 10 times. When you come to Treta Yuga, the lifespan will be 10,000. Then in Dwapar Yuga, 1,000. And in Kali Yuga, only 100 years. So that time they were able to do tapasya kiye the, 10,000 साल की तपस्या किए. Because lifespan was so long, so they were able to do that in Satyug. So in now we have only 100 years of lifespan. Okay, so in 100 years में प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि पहला 10 साल goes in bewilderment. आप just grow हो रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बोला तो हम लोग कर रहे हैं खेल कूद में. Next 10 years will go in your education again. So first 20 years gone life का, है कि नहीं? आपको पता है ना? Okay, first 20 years gone in education. Last 20 years गया बुढ़ापे में, old age. Everybody has to become old. Out of 100 years, तो कितना बचा अभी? 6 years बचा. 6 years में से half time sleep में, सोने में चला जाएगा. अगर 8 से 12 घंटे लोग सोएंगे, लेजीनेस करेंगे, उसमें आधा
तो बचा कितना अभी? 30 साल बचा। 30 साल में से अभी आप लोग फ्यूचर में IT कंपनी में जाएंगे तो करंटली आपको 10 से 12 घंटा काम करना पड़ेगा, तो उसमें से आधा आधा टाइम वहीं पर चला गया, ऑलमोस्ट 20 साल उसी में चला गया आपका, काम करना, ट्रैवलिंग करना, सब कुछ करना, उसमें चला गया। अब बचा हाथ में 10 साल। अभी 10 साल में आपको घर में सबको देखना है ना, फैमिली का ख्याल रखना है, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सबका ख्याल रखना है। तो दिस 10 years, Subrajyoti joined just now. Okay, so now 10 years are only there in your life. और 10 years बाद हम लोग ऐसे गवा देंगे, so then how will you connect yourself with God? There is no question of spirituality. So just the whole life will go like a rat race, भागा दौड़ी में. And at the end of the life, we will regret. अरे इतना सब कुछ किया, कुछ हुआ नहीं. Just yesterday only, one of my friend who is working with me, he is my team lead. He just passed away, and we are very shocked. How very good person, and just passed away. He was not coming to office from he was not online because he work from home. So he is from Andhra. So he's not online from past 2 weeks. And yesterday we got news that morning 4:30 he passed away. So how he passed away? They were saying that he had dengue, and because of dengue at night, his blood pressure got very low. Platelet count was low. In the hospital itself passed away. So this is the situation that you may not live for 100 years also. A small mosquito killed a person. See, so this is the situation of, so that's why the main thing, most valuable thing we have in our life is time. Okay, so the time we have to manage. Okay, that is very, it's most important thing. That's why these sessions have been taken for you. So I will come to that slide now where we have left last class. Okay, this all done, yeah. So last class we were discussing about the acquired bad qualities, right? We're not just body, we are spirit, soul, and how we have acquired bad qualities. I gave some examples of bad mouthing, interview example, which happened in my college, and then loyalty, working life mein. So this we discussed. So now, next thing is our attitude, okay? Okay, changes for healthy relationships and attitude. So attitude is matters a lot. Let me share this, make it full screen. Those who are online, आप मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना अभी सब लोगों को? Yes, Prabhu. So most of the time, what we think that I am what I am. We don't want to change your attitude. People are very afraid of changes, right? जैसे कि for example, you might complain that you have no time to read, no time to study something, or like that. But because there is no time, so I cannot study. But now if study is so important to you, then it is very easy to arrange your time. You can wake up a little early, half an hour early in the morning, or you can cut some time what you're browsing on YouTube and Facebook or WhatsApp. So these things you have to manage. जैसे कि समझिए कि बाहर बारिश हो रही है, okay, it is raining outside, and you have to go to the shop, nearby shop, and bring something. तो आप क्या करेंगे? अभी बारिश हो रहा है तो नहीं जाएंगे क्या? You will take an umbrella and you will go, right? So the main thing what I want to tell you over here is that you should not fight with the situation. Don't fight with the situation, okay? You have to adapt the situation and then go with the situation. बारिश हो रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, बारिश रुकने के बाद ही जाऊंगा. No, not like that. You have to go with it. If you accept the situation, then you will be peaceful, okay? Otherwise, you will be very much confused, very much क्या बोलते टेंशन में आ जाओगे, क्या करे क्या नहीं. So because situation will be always changing, so this change you have to accept in our life, okay? So this is one of the very important thing in time management. And coming to next slide. Yeah, what is your attitude towards learning?
लिंक ना मैं ग्रुप में सेंड किया, आपको नहीं आया क्या? एक मिनट. So what is the attitude towards learning? So no matter what age you are in, you have to be in the learning attitude only. Now, for example, if you come in future in some IT companies, so every time there is something new to learn. Okay, if you say that okay, मैंने अभी Java पढ़ लिया है. Okay, now here we have Nishan from CS background. Then here is one more Nishan from IT. Then we have here Shubhra Jyoti was there. He's also from just now placed in Infosys. So most of you are from this background. So that's why I'm giving the example that whenever you go, okay, you can't say मैंने Java पढ़ा है तो मैं Java में ही project करूँगा. You go in project in Java and client wants some new requirement. Now that cannot be fulfilled by Java. So you have to learn some new language. You have to learn some XML. You have to do some HTML in Java, or you have to do some service-oriented architecture language that you have to do. So every day there is something new. Okay, so this is very important learning attitude. एक बार प्रभुपाद यूएस में गए थे तो वहाँ पर भरतनाट्यम का डांस चल रहा था. Okay, so he was watching very nicely that they are dancing. So actually what he was watching is that how are the Americans appreciating our Indian culture. That is what he was watching, because through that only he can preach to them that what is their mindset, what do they like. So like that, Prabhupada, even in the age of 70, he is having the learning attitude. So this is again very important. So I discussed about change, how to adapt with change, then about learning attitude. Okay. No matter what age, how busy, are you always a learner? Then what is your mindset at work? So this is for the working devotees who are there here. What is your this for work? So we have to like balance and work. And one thing is that we need to constantly think on improving our japa or improving our reading, hearing. We should not take things casually. Okay, कि अभी you have a smart card in voice, sadhana cards, you are feeling it. So जो formality के लिए मैं कर रहा हूँ, not like that. In the beginning, okay, अभी जब start किया है. But when if you really want to go ahead, then you should make it as a quality time. मैं जो चीज कर रहा हूँ, that should be in quality, not just okay formality के लिए कर रहा हूँ करके. Even in your work. So when you do that, you will do that thing in less time. Less time में आप ज़्यादा कर पाएंगे. समझ रहे? So this is about your mindset at work. Do you endeavor to improve your current performance, or just as a formality अभी दिया गया है तो चलो करो और option नहीं है? Not like that. And then one more thing is that enthusiasm. This is also about change. Change. Yeah, I'll share this slide. देखिए आप स्क्रीन पे यहाँ पर. Change your thinking by self-awareness. Okay, self-awareness means you have to, now you have got to know how to adapt to change. You have got to know attitude should be learning attitude. Now you have to analyze yourself कि अब मेरे habits क्या है. क्या मैं रात में लेट से सोता हूँ, यहाँ पर सब वो analyze कर रहा है खुद को. Am I pushing my studies at the end कि मैं semester के end में 20 दिन पहले मैं पढ़ाई करूँगा? Am I doing like that and am I getting 0 marks in study tracker? यहाँ पर स्टडी ट्रैकर लगा हुआ है वॉइस में, जो लोग वॉइस में रहते हैं. सो आई एम आई गेटिंग 0 marks in that in my studies every day? So these all things is called self awareness. So means if
So these all things require enthusiasm. So one person asked Prabhupada, I'm not feeling enthusiastic. Prabhupada said, you act to be enthusiastic and will become enthusiastic. समझ रहे? Enthusiasm, अब लगता ना कि laziness feel हो रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, खाली खाली feel हो रहा है. So he was saying like that. But if you act as enthusiastic, you will get the enthusiasm. It is contagious like that. या फिर you get inspiration from some person, ऐसा इंसान जो enthusiastic है, उनके साथ रहेंगे, you will also get the energy. That is what Prabhupada was saying. Just like आप साइकिल चला रहे हैं और कोई जस्ट ट्रक जा रहा है ना, कोई साइकिल चला रहा है, ट्रक पकड़ लेता है, साइकिल also get the speed of truck. देखा है ना कभी ऐसा? So enthusiasm is like that. So if you are like that, you will be enthusiastic in studies. You will be very enthusiastic to lead disciplined life. All these things will come. यहाँ पर देखिए this one, and then change your behavior. सबसे पहले what is right, what is wrong. So when you read Bhagavad Gita or when you read the scriptures, then you will get an idea कि सही क्या है, गलत क्या है. Okay, you can make some decisions based on the scriptures. जैसे मैं बोला था ना last time, if you wear the spectacles of scriptures, then you will see the reality. Otherwise, सब लोग तो it are like hogs only everywhere. Then once you know what is right, what is wrong, then you have to say no to wrong and yes to the right thing. That thing requires willpower. Okay. पता चल गया कि अभी मुझे समझिए स्मोकिंग करना गलत है. Okay. But now सब लोग कर रहे हैं, आजकल तो फैशन ही बन गया स्मोकिंग करना. कॉलेज के बाद इवन गर्ल्स भी स्मोकिंग करते हैं. So now you need the willpower to say no to that. Okay. That willpower will come by meditation. Okay. By the holy name of God. By chanting the holy name of God. So that will come by, that willpower will come by that. And then you boost your willpower by discipline practice. और अगर ये same चीज़ practice करेंगे, this will become a habit. Then nobody can change it. समझ रहे? Same चीज़ practice करेंगे तो. So this is what is being taught in here, boys. Those who stay here, like they both are staying here, so they know it. That morning सुबह जल्दी उठते हैं, meditation करते हैं. We hear something of Bhagavad Gita, and night everybody has to sleep by 10 o'clock latest. So all. जनरली मैं नाइट में स्टडी होता हूँ, मैं रात तक देर तक पढ़ता हूँ, तो मैं सोने में उठने में 8 बजता है. तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं इसको डील कर सके साथ साथ कि इसमें भी आपका खुदा भी जान सके, मतलब इसमें गॉड पे भी ध्यान दे सके, इसमें Okay, I'll answer that at the last. Okay, I got your question. I'll first finish this and then answer it. Okay, and then next is that clear goals and vision. So now पिछले यहाँ पर आपने आपका behavior, पहले आपने क्या ये किया, पहले आपने सीखा कि आपके गोल की तरफ जाना. You have to balance your life. Then next one was, what was next one point I discussed? Your attitude towards change. You have to adapt to the change. Then next, attitude towards learning. You have to always have a learning attitude. Okay. Now this is for your behavior, which we discussed just now. And then you have to have a clear goals and vision. Okay, clear goals and vision. तो देखिए first यहाँ पर एक step to your goal. First is milestone. Now you have to take small steps. Like this here, step 1 पे अगर आपका goal step 5 पे जैसे last time बोल रहा था, you have to manage your time by result. Okay, result क्या आएगा उसके हिसाब से मुझे अपना goal बनाना पड़ेगा कि मैं ये steps करूँगा. अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो okay 5 step करूँगा तो मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा. And then you have to take that first step, that milestone. Okay, this is the first thing, milestone. And then second one, connect with experts. Okay, now you have to connect with the experts in that field. जो उस field में expert है, जैसे कि समझिए you are little weak in some subject, so some boy who is expert in that subject. Okay, you connect with him.
at least if you are with him, you will get some knowledge. Jaise, for example, in my office, there is one boy called Srinanda. So he is very expert in web designing, front end. So whenever we are not on front end, but we are not expert in that. So whenever we want some help of front end in our project, is there something, we'll just ask him, this thing is how can you do. When you connect with experts, then it will save your time also, and you will also get to learn. Okay. Okay, पहली बार आएगा. Okay, बैठ जाइए. So connect with experts, and then be a part of community of those with similar passion. Okay, similar people. Just for example, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, so be with them who sleep early and wake up early. Then we'll get that habit. समझ रहे? अगर आपको similar mindset जिसके साथ रहेगा उसके साथ रहेंगे, so we'll grow like that. So this is the basic. Now I'll come to something little change in the topic, because this is very important for you to understand. Yeah, self-test my personality type. So see, can anyone read this thing? Know your personality type and prepare yourself to be a noble leader. Yeah, so see here, there are now 3 modes are there: mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. So I think most of you know this thing, so I'll just say in brief. For you will have some session on that, about mode of goodness, ignorance, and passion, how these modes affect us. Okay, so mode of ignorance. So ignorance में देखिए, ignorance means निद्रा, आलस्य. Okay, we oversleep, और आप उनके साथ स्लाइड शेयर कर सकते हैं फोन में, so that he will also get to know. Like postponing things, decision time पे लेने पाते हैं, or getting intoxicated, confused, feeling dull, inattentive, all the characteristics of ignorance. Laziness, suicidal thoughts आना, bewilderment, confusion रहना, depression, hopelessness, fear, ये सब ignorance का ये है, mode of ignorance. Okay, then comes mode of passion. Okay, cognizant का tagline है, passionately cognizant. तो ये passion में क्या होता है कि you have more pride, you are more greedy. यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स स्क्रीन पे दिखाया गया, देखिए. इंटॉक्सिकेशन, बॉसिंग टेंडेंसी, थर्स्ट फॉर ऑनर, मुझे रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, जल्दी गुस्सा आना, फिर कट थ्रोट कंपटीशन, impress opposite sex, lusty desire, over ambitious. So all these things come in mode of passion. Okay, and then comes mode of goodness, sukham and jnanam. Okay, so in this a person will have these qualities, these characteristics. Cleanliness hoga, wisdom, he will have forgiveness quality, very important quality. Controlled mind, disciplined lifestyle, compassionate, friendly, very submissive, noble, thoughtfulness, simplicity, regulated life. So now these are the characteristics of the 3 modes. So now what do you think? कौन सा मोड में का इंसान आपको अच्छा लगेगा? Goodness. सत्यगुण. Suman Prabhu is saying goodness. आपको इंग्लिश कंफर्टेबल है, और कंफर्टेबल इंग्लिश, राइट? कंफर्टेबल. आप लोग कौन सा इंसान अच्छा लगेगा? Goodness, passion. Mode of goodness. Okay, everybody is saying goodness. Okay, very nice. Passion का भी I'll come to that also. Passion, some call passion also good. So see, now here there is a situation tackling exercise. Okay, so ये स्टोरी तो आपको पता ही होगा, राइट? कि एक आदमी वहाँ पर गया था, कैप सेलर, और वो वहाँ पर रेस्ट ले रहा था झाड़ के नीचे, और उसके बास्केट में कैप्स था. So जो बंदर थे पेड़ पे, now they saw the basket has caps. तो उसने भी कैप पहना है, कैप्स पहने, तो सब बंदर आ गए, and they took the caps and they went on the tree. अभी क्वेश्चन यहाँ पर है,
how would one behave in such situation if one was in either mode of goodness, passion or ignorance? Okay. तो अभी मैंने आपको 3 मोड्स के बारे में बता दिया, 3 मोड कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो अभी आप लोग 3 जन मुझे आंसर देंगे. गुडनेस में वो कैसे बिहेव करेगा कैप्सुलर. ओके, अगर गुडनेस में रहेगा तो. अगर पैशन में रहेगा तो कैसे बिहेव करेगा, और इग्नोरेंस में रहेगा तो कैसे बिहेव करेगा. ओके, तो थिंक फॉर 30 seconds and you answer. Online someone wants to answer, you can just. Okay, Varun wants to answer and okay. Just wait. इग्नोरेंस में तो just wait. वो आदमी सो जाएगा फिर से. Okay. Yeah. पैशन में तो वो बंदरों को मार देगा शायद. Okay. I'll come to you. इग्नोरेंस में रहेगा तो वो छोड़ देगा, मतलब वो क्या के बारे में बोलेगा कि चलो अगर ले गया तो ले गया, अपन हट जाते हैं, ऐसे कुछ. लेजीनेस रहेगा. लेजी वाला. अगर वो इग्नोरेंस हो गया. ठीक है. Now here Varun Prabhu is there online. So Varun Prabhu, what will you do in passion? अगर वो पैशन में होगा तो वो सबको दे देगा, छोड़ देगा, मतलब कि वो अच्छे काम करने के लिए. पैशन में है तो सबको दे देगा, छोड़ देगा. हाँ, छोड़ देगा. नहीं गलत है. ओके, निशांत बोलने आते पैशन में क्या होगा. पैशन में बंदर लोग खोजते रहेगा, पागल हो जाएगा वो लोग के पीछे. मार देगा. ओके, दोनों निशांत एक साथ बोल रहे हैं यहाँ पर भी. ठीक है. ओके, आप क्या बोल रहे हैं निशांत जो ऑनलाइन है. बंदर के पीछे पागल हो जाएगा, वो लोग को चेस करना चाहेगा. करेक्ट. गुस्सा होगा, बंदर के पीछे पागल जैसे ये करेगा, उनको मारने का. हाँ. ओके, गुडनेस में क्या करेगा आप बताइए. टोपी फेंक देगा और सब बंदर टोपी फेंक देगा और सारे बंदर भी टोपी फेंक देंगे. तो दे दो ना. गुडनेस से कैट. ओके, ऑनलाइन में तो आंसर मिल गया मुझे. दो ऑफलाइन. एक जन बोलिए. मतलब वो कॉपी करता है तो वैसे ही हम उसका यूज कर देंगे. करेक्ट. तो देखिए गुडनेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है. विजडम, सुखम एंड ज्ञान, विजडम. सो ही विल इंटेलिजेंटली थिंक विद पीस ऑफ माइंड कि ओके, बंदर में टोपी पहनो करके टोपी पहनने है, टोपी निकाल के बास्केट में फेंक दूंगा, सब लोग ऐसे काम करेंगे. समझ रहे. सो दिस इज हाउ द मोड्स पर्सन मोड विल बिहेव लाइक दैट. ओके, तो भी हम लोग कौन से मोड में है, हम लोग को ये जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे यहाँ पर अभी आदित्य प्रभु बोल रहे थे कि लिटिल बिट ऑफ पैशन इज ऑल्सो गुड. ओके, देखिए यहाँ पर वही उसका एक सबसेट सब बना के यहाँ पर देखिए कि S for Satvik, okay, enlightened soul, a noble man who is loving and compassionate, a man of perfection. This is in the mode of goodness, okay. And R मतलब क्या, राजसिक, यानी कि mode of passion, okay. He will be like commercial businessman, example like a commercial businessman, or he'll be very aggressive, little bit selfish, full of selfish and prone to active life, okay. And then उनका दोनों का सेंटर में देखिए S+R. He is assertive, stands for principles and values. Okay, this is a noble leader with vision. Okay, इसी called as राज ऋषि. मैं लास्ट टाइम आपको बोला था राइट, राज ऋषि एग्जाम्पल ऑफ किंग. जस्ट लाइक अगर आपके पास गैस का सिलेंडर है, ओके, सिलेंडर है, इसमें बहुत सारा गैस है. सो व्हाट यू नीड रेगुलेटर, रेगुलेट दैट गैस फ्लो. So the cylinder is in mode of passion, and the goodness is a regulator which regulates the gas flow. Then only you can use the gas without wasting it. समझ रहे? Same thing like I told last time that the kings who were there in the Kshatriya जो रहते हैं, they are in mode of passion, and जो Brahmins रहते हैं, they are in mode of goodness. That's why when a Brahman guides the Kshatriya, Raj Rishi, राजा को ऋषि गाइड कर रहा है, mode of goodness, and then he will be taking correct decision. He will do everything perfectly. समझ रहे? So this is the ideal mode which we should be in. ठीक है? So this basic में एक आइडिया दिया था आप लोग को मोड्स के बारे में, because next slides
will be on, there will be something from these modes connected to that. Okay. And then coming to next slide. इसमें किसी को डाउट है जो लोग फर्स्ट टाइम? राज ऋषि मतलब आपका he will be like passionate, okay, कि मुझे like I have to work nicely in my company और मुझे पढ़ाई अच्छे से करना है, okay, but at the same time I should not be so much into that कि I miss my personal activities or my personal life. Some people who are very workaholic, right? जैसे वरुण प्रभु के जो मैनेजर है यहाँ पर, बैंक मैनेजर, very workaholic. उनको बोलता है काम ही पूजा है. वो लोग को सुबह 9 बजे आते हैं बैंकर्स, वो लोग को छोड़ता है रात में 10 बजे. बेचारे वरुण प्रभु जाके एचआर से कंप्लेंट किए थे कल उनका. मेरे को इतना काम करा रहे करके. Yes, वरुण प्रभु. So you have an example of mode of passion in front of you. Always working. उनको शुगर का बीमारी है, घर में पत्नी का जमता नहीं है, not giving time at home. Personal life is totally gone. Spirituality का क्वेश्चन ही नहीं है spirituality का. समझ रहे? This is mode of passion. So now mode of goodness means you do your work, आप अपना काम कीजिएगा और आपका पढ़ाई कीजिएगा, but you do in such a way that you will score good in that. At the same time, you will also have your spirituality and your personal life very nicely situated with that. That is called as balance. That's why I said balance is a golden word. समझ रहे? कि आप पढ़ाई करो, in less time you give more output. You should be productive. Okay, that is what is Raj Rishi quality. He'll be proactive, not reactive. Situation change होगा, he will proactive tackle situation. सिचुएशन में तो कुछ लोग क्या रिएक्टिव हो जाते हैं एकदम, क्यों ऐसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये वो, नॉट लाइक दैट. समझ रहे? सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राज ऋषि. ठीक है. सो नाउ दीज आर द आइटम्स दैट बूस्ट द, दीज आर द okay, so these are the items in the which will increase the mode of goodness. Yeah, so someone can read this. Yeah, Varun to read करना चाहते हैं. Okay. Items that boost mode of goodness. A for association of saintly whose hearts are filled with positive qualities of love, compassion. Then second, B, books, study and application of wisdom books. C for chanting and meditation. D, this for exercise. Diet means fruit, milk, grain, cereals, vegetables, products, sanctified karma free. And fifth, environment. That is avoiding unfavorable ambience and accepting a spiritual ambience. Prabhu, your mic is muted. Hello. Yes, now I got it. Mic was muted. Okay. So, association of saintly people. So, this is the A for coming into mode of goodness. Okay. This is the association which you are having. Everyone is like with the balanced life. They want spirituality also and they want to have a good life also. So, this is association. Then books. Then study and application of wisdom books. Not just novels. Harry Potter का novel पढ़ लिया, Twilight Saga का novel पढ़ लिया, all this half girlfriend चेतन भगत. Not these books. ये book पढ़ेंगे तो आप लोग चले गए समझ लो. ठीक है. Books of wisdom and knowledge. These things you have to read. Then chanting and meditation. Meditation is required, very necessary in our life. Then diet and exercise. देखो ये सब तो basic thing है, right? We should do these things. Are we doing? Most of us not doing all these things. Very rarely someone does this thing, right? Diet and exercise. Fruit, milk. Diet should be vegetarian diet. It will help a lot. Vegetarian diet to improve your intellect. Milk will
nourish your brain tissues to understand more spiritual content. Okay, cereals, grains, vegetable, sanctified karma-free food. So, what is the sanctified karma-free food? Okay, sanctified food means nothing but the food which is not having any karma. मैं शायद से बोला था आप लोगों को पहले, आई एम नॉट श्योर. जिस खाने में कर्म नहीं होता है उसे बोलते हैं, you all know. ऑफरिंग किया हुआ. Yeah. So when we अभी हम जो भी हम लोग खाना खाते हैं, समझ लो आप कॉलेज से अभी आए तो गरम गरम छोले भटूरे वहाँ पर बना रहे हैं, तो आप लोग जाके वो खा लिए, ठीक है. So now जो एक प्लेट छोले भटूरे आपने खाए हैं, तो in that you will get the karma of 6 people. क्या? ये फिर मुझे आप बताए थे कि 6 पीपल लोगों का कर्मा रहता है, तो जब हम correct. तो 6 people ऑफर करते हैं, 6 people karma you will get in that. The person who will जो cereal, हाँ, जो क्या बोलते हैं, सीड को पहले जमीन में बोएगा, then the person who will take care of the seed, उसको सींचेगा, फिर जो उसको हार्वेस्ट करेगा, फिर जो उसको वहां से बेचेगा, ट्रेडर जो उसको लेके आएगा, दुकान वाला सेल करेगा, और जो रसोई करेगा. हाँ, वो तो ऐसे 6 लोग हैं, तो 6 लोग का कर्मा उस खाने में है जो आपने खाया है. समझ रहे? सो ये सब. और हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे मैं तो कुछ गलत नहीं किया लाइफ में, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, क्यों मेरे लाइफ में गलत हो रहा है, ऐसा सिचुएशन क्यों, मेरे लाइफ प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है? बिकॉज अदर पीपल कर्मा भी आप ले रहे हैं आपके लाइफ में, गुड एंड बैड बोथ द कर्मा. So this is what is happening. So sanctified food means what? The karma खाने से निकाल दिया जाएगा, उस खाने से कर्म निकाल जाएगा. तो what? हाँ. So उसको हम लोग हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्रसाद. समझ रहे? We call this प्रसाद. Simple. जो भी आप कर रहे हैं, आपने खाना बनाया है, जो भी बनाया है, just take that food because भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, हवा, पानी, ये सब चीज भगवान ने दिया है, right? Just take that food and just keep it in front of God and pray that मैं जो मेहनत करके कमा के लाया हूँ, so I am making some food of that, out of that I am preparing something, so please accept this food. So भगवान ने हमको दिया, so we just offer a little bit to God, and God what he will do, Krishna, he will take all the sins from that, all the karma वहाँ से निकालेंगे, and he will give his mercy in that, his blessings. So when we eat prasad, so we won't get karma of anyone. That is called sanctified food. ये भागवत गीता के 3rd चैप्टर है, कर्म के ऊपर है. 3rd चैप्टर, आई थिंक कर्म योग में भी 3rd चैप्टर, उसमें डिटेल में दिया गया है हाउ द कर्मा एक्ट्स ऑन यू, कैसे उससे निकला जा सकता है. वो जो मतलब वो प्रोडक्ट को लाने में उसका जो कर्म होगा वो मेरे ऊपर ही उठाना. 6 लोग का कर्म वो खाने में है जो आप खा रहे हैं, मतलब वो मेरे ऊपर भी, हाँ, आपके ऊपर भी इफेक्ट होगा. एंड देन आप बोलेंगे कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है. हाँ, अगर उसमें से कोई किसी का मर्डर कर दिया, उसका कर्मा उसके ऊपर है, आपने कुछ नहीं किया, तो आपको भी उसका इफेक्ट होगा. समझ रहे? चोरी करके लाया, या कोई खैनी पान खा रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, नशेड़ी है, वो ऐसे काम किया, वो आपने तो कुछ नहीं किया, पर आपको उसका रिजल्ट आ रहा है. हाँ, समझ रहे? सो ओनली भगवान ही हमको इससे बचा सकते हैं. समझ रहे? दैट्स आप कहीं पर ही जाओ, बड़े बड़े मंदिरों में, तिरुपति, ऑल टेम्पल्स यू गो, वॉट एवर दे प्रिपेयरिंग, वो पहले भगवान को ऑफर करते हैं, एंड देन वंस यू ऑफर टू गॉड, इट विल बिकम प्रसाद, एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन. ओके, सो दिस इज द सैंक्टिफाइड फूड. और यहाँ पर वॉइस में हम लोग तो 3 बार वही खाना खाते हैं. जो भी हम लोग खाते हैं प्रसाद. Then last is environment, E, avoiding unfavorable ambience and accepting spiritual ambience. That is that actually it is nothing but our association. हम कैसे संग में रहेंगे, that will also increase the mode of goodness. ठीक है? So this is something this I will take in some other session. This thing, these are all about different zones of mind. So I will take that. Now we'll go to a self test. Am I a plus time manager or not? ठीक है? तो till now
Now this section of slides will have some exercise in it. Okay. तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया है what are the 4 quadrants of time management. फिर time management का 4 generations क्या है, उसमें से कौन सा सबसे बेस्ट जनरेशन टाइम मैनेजमेंट है. फिर आज हम लोगों ने डिस्कस किया एटीट्यूड ऑफ टुवर्ड्स चेंज और बहुत सारा अलग अलग थिंग्स डिस्कस किया है. सो नाउ देयर विल बी अ सेल्फ टेस्ट अमंग्स आवरसेल्फ. ओके. So plan, do and interact. Okay. First we plan and then we do and then we interact. So I will just explain this slide to you. मैं ये slide show नहीं हो रहा है क्या? Just one. हो रहा है. Okay. ओके. तो देखिए प्लान, डू एंड इंटरैक्ट. सो अगेन हियर ना 3 थिंग्स है कि सबसे पहले कोई भी चीज करने के लिए वी हैव टू प्लान समथिंग. ओके. पहले प्लानिंग करेंगे एंड देन विल प्लान करने के बाद विल एक्सिक्यूट दैट एक्टिविटी, विल डू दैट प्लान एक्सिक्यूशन एंड ऑल्सो वी नीड सम इंटरेक्शन विद सम पीपल ऑल्सो. ओके. उसको पूरा तरीके से पूरा कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. नाउ अभी इसमें 31st. ओके. इसमें अभी आप लोग को खुद को ये करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं. ओके. तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग खुद यहाँ पर आपको क्या करना है. these are the actual answers I am showing you. Now you have to see that are you good in planning or are you good in doing executing that plan or are you good in interacting. Okay. तो जिसमें आप ठीक है उसमें प्लस आ जाएगा, एक प्लस देना है. और जिसमें आप जिस एक्टिविटी आप नहीं कर पाते उसमें माइनस देना है. ठीक है. तो बस 30 सेकंड लेके खुद को सोच के देखिए, खुद का एक ये बनाइए आप कौन से आपको कितना प्लस मिलता है कितना माइनस मिलता है. हाँ उसी में बोल रहा हूँ. प्लान, डू और इंटरैक्ट. टाइम मैनेजमेंट में 3 चीज है. पहले आप प्लानिंग करेंगे किसी चीज करने का. नाउ यू हैव टू एक्सिक्यूट दैट थिंग उस पर्टिकुलर टाइम में. ऑल्सो विल इंटरेक्शन विद पीपल ऑल्सो. इंटरेक्शन विद पीपल. कोई भी चीज एक्सिक्यूट करने के लिए आप सब कुछ अकेले नहीं कर पाएंगे, है ना. यू नीड सम हेल्प ऑफ सम पीपल और किसी से आपको डेलीगेट करना पड़ेगा टास्क. ओके. आज इतना काम दिया गया है, सो नाउ आई विल डू दिस मच पोर्शन, यू डू दिस मच पोर्शन, लाइक दैट, है ना. एवरीवेयर वी डू इंटरेक्शन. नो इंटरेक्शन नथिंग इज पॉसिबल. सो नाउ यू आर गुड इन व्हाट थिंग्स. आप कौन सी चीजों में गुड है आप खुद अच्छे हैं, आप खुद 30 सेकंड लेके सोच के देखिएगा. ओके. एंड देन आई विल शो यू द आंसर्स, देन यू विल कम टू नो. आप प्लानिंग में अच्छे हैं या फिर आप काम करने में अच्छे हैं या फिर आप इंटरेक्शन में अच्छे हैं. या आप प्लानिंग और काम करने में अच्छे हो सकते हैं या फिर आप इंटरेक्शन में और प्लानिंग में अच्छे हो सकते हैं. ओके. रेडी. ऑनलाइन ऑनलाइन रेडी. ओके. सो आप लोगों ने आपका दिस इज फॉर योर ओन थिंग. ओके. फॉर योर ओन सेल्फ टेस्ट. आई विल नॉट नो व्हाट यू शुड नो योरसेल्फ कि मैं किस में अच्छा हूँ. ठीक है. सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस थिंग. या देखिए यू आर अ प्लस टाइम मैनेजर इफ यू गॉट यहाँ पर प्लानिंग, इन डूइंग और इंटरेक्टिंग तीनों का आपको दिख रहा है ना ब्रो स्लाइड्स. हाँ. और इसका प्रिज्म बोला गया. अगर आपको तीनों में प्लस मिला देन यू आर अ परफेक्ट पर्सन. आप सब अच्छे से कर रहे हैं. ओके. अभी अगर आपको प्लस मिला है प्लानिंग में और काम करने में, ओके, इसका मतलब क्या है कि आप यू डोंट केयर मच अबाउट अदर्स. आप खुद का चीज अच्छे से करेंगे, खुद का अच्छे से प्लानिंग करेंगे, खुद का काम अच्छे से करेंगे. आपको कुछ काम दिया गया है खुद अच्छे से करेंगे, पर दूसरे के बारे में कुछ ख्याल नहीं रखेंगे. वोंट केयर मच. समझ रहे. ऐसे भी लोग होते हैं ना, अपना सब अच्छे से करेंगे, दूसरों का ठीक है अपना काम. एक गोविंद बोलता अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता. पॉलिटिशियन लोग
अपना सब काम करेंगे. ओके, लाइक दैट. अगर आपको प्लानिंग में माइनस मिला है एंड डूइंग एंड इंटरेक्टिंग में प्लस मिला है, देन इसका मीनिंग क्या है? एक्सपर्ट इन डूइंग अदर्स वर्क. आप दूसरों के काम अच्छे से कर रहे हो, खुद के काम अच्छे से नहीं कर रहे. समझ रहे? हाँ, अगर आपको माइनस प्लस प्लस मिला है, इट मीन्स यू डू अदर्स वर्क वेरी नाइसली, पर खुद से कामों को प्रायोरिटी नहीं देंगे. लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं ना, इंटरेक्ट करेंगे, उनका काम उनको हेल्प कर देंगे, तो खुद का बचा है वो नहीं करेंगे. दूसरों को हेल्प करते, उसको जॉब मिल गया, मेरा क्या हो गया, मैं लटक गया यहाँ पर. समथिंग लाइक दैट. मेनी लाइक पीपल ऑल्सो देयर वी सॉ इन अवर कॉलेज. एंड देन अगर आपको प्लस माइनस प्लस ये मिला है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, यू हैव गुड इंटेंशंस, बट आपका काम नहीं होता है. मतलब आप अच्छे से प्लान भी करते हैं, अब लोगों से बातें भी करते हैं, एवरीथिंग वेरी नाइस, बट आप प्लान को एक्सिक्यूट ही नहीं करते, आगे नहीं बढ़ रहे. प्लान बना के रखा है कि मैं ऐसे करूंगा, सब कुछ बात क्या है, पर आप वो कर नहीं रहे. नॉट गुड एट डूइंग दोस थिंग्स. सो आप लोग को एक आइडिया मिल गया, आप लोग कौन से इसमें है. ओके, सो and then next one is, are you a daydreamer or are you a workaholic, or you people friendly but poor at finishing work? Okay, daydreamer means only plan but will not execute that plan. मैं ऐसे करूंगा, मैं अभी ये कोडिंग करके इतना सब कुछ कर लूंगा, मेरा अच्छे से एक ये ब्लॉक में लोग को सिखाऊंगा भी, जावा का भी ट्यूशंस भी लूंगा, बस मैं ये करूंगा, जॉब लेके आऊंगा, सब प्लान करेंगे अच्छा से, पर उसे एक्सिक्यूट नहीं करेंगे. डे ड्रीमर्स. ओके, देन नेक्स्ट इज वर्कहोलिक. वर्कहोलिक मतलब ओनली वर्किंग विदाउट प्लानिंग. प्लान कुछ नहीं है, बस वर्क करते आने. वेरी हार्ड वर्किंग, काम का नशा रहता है वो लोग को, वर्कहोलिक. हाँ, उतना आउटपुट नहीं आएगा, प्लान किया नहीं है, या फिर आउटपुट भी आएगा, पर जो आउटपुट आपको 3 घंटा काम करने से आएगा, वो आउटपुट आप 6 घंटा काम करके लेके आए. प्लान नहीं किया है, ऐसे कर रहे सब कुछ. समझ रहे? वर्कहोलिक. एंड देन पीपल फ्रेंडली, जो डिस्कस किया था कि सब लोगों से फ्रेंडली है पर खुद का काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत लोग होते हैं. सो आप कौन से कैटेगरी में है, यू हैव टू डिसाइड दिस थिंग. यहाँ पर फिर से उसका आर यू माइनस टाइम मैनेजर, पहले था प्लस टाइम मैनेजर, नाउ माइनस टाइम मैनेजर. डे ड्रीमर में आप बस प्लान करते, कुछ करते नहीं. वर्कहोलिक में बस काम करेंगे, प्लान नहीं करेंगे ना इंटरेक्शन करेंगे. डिलाइटफुल बट इनकॉम्पिटेंट, सब लोग आपको पसंद करते हैं, अच्छा लड़का है, अच्छा सबसे अच्छा ये बिहेव करता है, वेरी डिलाइटफुल बॉय, बट इनकॉम्पिटेंट, ना प्लान कर रहा ना काम कर रहा है. और लास्ट वन इज वेरी वर्स्ट केस, सब माइनस, neither delightful nor incompetent. Okay, then next one. Yeah, see, this one was the quadrants which I was saying in the beginning. Okay, time management matrix. Okay, quadrant 1. Okay, so कोई रीड करेगा quadrant 1 क्या है? आशीष आप रीड करो, उसको अनम्यूट करके रीड करो ताकि जो ऑनलाइन है वो लोग को सुनाई देगा. Now, crisis and deadlines, breakdown, maintenance, health crisis or high attrition. Okay, thank you. So quadrant 1 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट. ये चीज इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, दोनों चीज एक साथ आ गया. ओके, तो वो आदमी हर टाइम एंग्जाइटी में रहेगा और डिसाइड नहीं कर पाएगा, बस करना ही है अभी. समझ रहे? इम्पोर्टेंट अर्जेंट. सो दे विल बी हैविंग दिस थिंग, डेडलाइंस रहेगा, ब्रेकडाउन, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, हाई एट्रिशन रेट्स. ओके, देन सेकंड क्वाड्रेंट इज क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी. पहला इज क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन, सेकंड इज क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी. यस, नीतीश आप रीड कीजिएगा अनम्यूट करके. Training, education and empowerment, planning and preventive maintenance, self-development and relation building. Okay, thank you. So quadrant of quality मतलब क्या है कि वो चीज इंपॉर्टेंट है पर वो चीज अर्जेंट नहीं है. ओके,
वो चीज़ जैसे कि आप क्या बोलते हैं, आज जैसे लास्ट में हुआ था कि आपने कुछ लास्ट में फेस्टिवल हुआ था यहाँ पर, तो फेस्टिवल इम्पोर्टेंट था, पर हम लोगों ने उसका प्लानिंग किया था, पहले करके रखा था, ऑलमोस्ट 1-2 मंथ्स पहले करके रखा था, ऐसे ऐसे करना है. सो वी हैव प्लान दैट, और उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग सर्विसेज का अलग अलग लोग को अलग सेवा दी थी, क्योंकि आप अकाउंट्स का मैनेजमेंट कीजिए, आप प्रसादम मैनेजमेंट कीजिए, आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का देखिएगा, आप डेकोरेशन देखिएगा, तो सब प्लान करके रखा गया था. तो इसीलिए दिस इज मीन्स आपको उसमें उतना एंग्जाइटी नहीं रहेगा, सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है, सब कुछ डिसाइडेड है, so it is very easy, you can easily do it. Quality work, planning and preventive maintenance, self development, relation building, all these things are quality of means quadrant of quality में ये सब characteristics आपको आएगा. Then comes third one, if someone online anyone can read here, online anyone can read. Nishant online quadrant 3. Sir, Prabhu, delegate phone calls for information, drop in unexpectedly visitors. Yeah, so these things are urgent but not that much important. Okay, उतना important नहीं है, पर अभी आपको करना पड़ेगा ये चीज. समझिए कि आपको आप भागवत गीता लेके बैठे हैं पढ़ने के लिए, आज डिसाइड किया कि मैं आज 30 मिनट्स के लिए गीता पढ़ूंगा, भागवत गीता. सो आप अभी शाम को लेके बैठे हैं. नाउ सम न्यू बॉय कम्स हियर. ओके, अभी कोई नया बॉय आया है, सो यू हैव टू अरेंज सम प्रसादम फॉर हिम, कुछ खाने के लिए, और ब्लैक मैट ब्लैक अरेंज करना है, पर आपको गीता भी पढ़ना है. सो व्हाट यू डू नाउ, डेलीगेट दैट वर्क. ओके, आप किसी के द्वारा वो उनको हेल्प करेंगे. You should not be like, okay, I have to read Bhagavad Gita, so let it be. Whatever happens, someone will take care of him. Why should I bother about it? When you do this thing, relationship will get spoiled. समझ रहे? So this thing, it is urgent thing, but not important. Anyone can do it. Okay, like that. So this delegation is in quadrant 3, quadrant of deception. ठीक है? And then quadrant 4, quadrant of waste, unproductiveness, unproductive engagements, time wasters. They're not important work and not urgent work also. Okay, watching movies for a long time, Facebook, WhatsApp, YouTube पे browsing करना, कैसे time चला गया, you don't know. So these things are coming in that. These things you have to delete. Okay, so ये quadrants का आपको idea हो गया, right? So out of all these things, quadrant 2 is the best quadrant. Okay, you'll be more peaceful, you'll have more focus. मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. So this is what आपको पता नहीं था. So I showed this slide. Okay, so it will be easy. Then coming to next slide. Find out which mode these time wasters belong to. Okay. Yeah. Never setting goals, or setting goals and not sticking to them. So मैंने आपको 3 मोड के बारे में बोला है. ओके, सो ये कौन से मोड में आएंगे? इग्नोरेंस में. निशांत रू करेक्ट, इग्नोरेंस. गोल सेट नहीं करते हैं, और करेंगे तो भी उसको अकम्प्लिश नहीं करते. ओके, सेकेंड वन, मूविंग अराउंड एंड सोशलाइजिंग टू मच टू फील सिक्योरिटी. शिवा एंड प्रभु ऑनलाइन, बताइए which mode this will be in. Yes, Subandru, are you there? Subrajyoti? Okay, आदित्य आप बताइए. ओके, तो कौन से मोड में आएंगे? मोड ऑफ गुडनेस और पैशन और इग्नोरेंस? इग्नोरेंस में आएंगे, पैशन में नहीं आएंगे. ओके, मोड ऑफ पैशन में आएंगे, मोड ऑफ पैशन नहीं, मोड ऑफ इग्नोरेंस में आएंगे. ठीक है, पैशन में नहीं है, बिकॉज ही इज सोशलाइजिंग टू मच टू फील सिक्योरिटी. दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं. ओके, now see third one.
low level of concentration, getting easily distracted by trivial things. Yes, कौन सा mode? Ignorance. Then doing more than one thing at a time and accepting unrealistic deadlines. पैशन में एक चीज करेंगे दूसरा चीज करेंगे, ये एक चीज करना है वो चीज करना है सब कुछ करना है, ऐसा गोल सेट करेंगे जो पॉसिबल ही नहीं है, वो पैशन में है. ठीक है. गेटिंग इन्वॉल्व इन एवरीथिंग टू गेन क्रेडिट एंड पॉपुलैरिटी. पैशन. इनडिसिसिव एंड पोस्टपोनिंग डिसीजंस. नॉट एबल टू डिसाइड क्या करना है क्या नहीं. इग्नोरेंस का मोड. देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लाइफ में हर एक चीज आएगा आगे. Then thinking no one else can manage my work if I'm absent. Passion. ये हमारे इसमें while you were my colleague only, okay. So very क्या बोलते हैं कि हमको एक you will be given one activity, okay. one डेवलपमेंट एक्टिविटी की आपको ये कोड या फिर प्रोजेक्ट आपको बना के सबमिट करना है. ओके. सो नाउ दैट एक्टिविटी विल हैव अ टीम. ओके. एक टीम लीड रहेंगे और उसके नीचे 2 लोग रहेंगे और एवरीबॉडी विल बी इक्वल, सेम लेवल में भी होता है कभी कभी. सो ये जो पॉइंट है, नो वन एल्स कैन मैनेज माई वर्क इफ आई एम एब्सेंट. सो देयर वाज वन गर्ल इन माई कलीग ओनली इन माई प्रोजेक्ट. सो उतना मतलब अगर वो नहीं रहेगी तो उसको कोई मैनेज नहीं कर पाएगा, उसको वही टेंशन रहता है ऑल द टाइम, उसका वो चिंता रहता है. बिकॉज ऑफ दिस थिंग शी was not coming to office for 3 days, something like that. So we asked what happened. So now she is saying to manager that she has got a kidney stone और उनको अभी लेजर ऑपरेशन के थ्रू उसको निकालना पड़ेगा. समझ रहे? So then she is saying, then at the last she realized that I gave my life and soul for working. Every time I was thinking कि क्या होगा, क्लाइंट से बात करना है, अमेरिकन्स आर वेरी मतलब गोल घुमा के आपको फिर डबल काम करवाएंगे, ये वो ऑल दोस थिंग्स. सो मैं नहीं रहूंगी तो मेरा टीम मैनेज नहीं कर पाएगा. ऑल दोस थिंग्स, ऑलवेज वर्कहॉलिक, नॉट ड्रिंकिंग वाटर, दिस थिंग, एंड दिस इज अ सिचुएशन, मोड ऑफ पैशन. समझ रहे? नेक्स्ट, feeling difficulty to work with highly accomplished and smart leaders. पैशन, और इसमें पैशन भी है और इग्नोरेंस दोनों है इसके अंदर. ओके. क्योंकि आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं इग्नोरेंस में, हाईली एक्सपीरियंस्ड लीडर है, मैं कैसे उनके साथ मैनेज कर पाऊंगा. और पैशन, आप टीम क्या बोलते हैं डिफिकल्टी भी फील कर रहे हैं वो लोग के साथ काम करने के, इसमें दोनों आएगा. देन फॉरगेटिंग द थिंग्स और बैडली ऑर्गेनाइज अनक्लीन डेस्क, ignorance. Looking for too much of perfection in job leading to micro management. कोई मैनेजर बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करते कि नहीं आपको ये चीज ऐसे ही करना है, हाँ नहीं तो नहीं होगा. आपने कोई अलग लॉजिक बना के क्या है कि नहीं, आई वांट इन दिस वे ओनली. सो माइक्रो मैनेज करना, again in the mode of passion. Okay, so so this is the main thing, personal life and professional life. So you have to, like last time मैंने बोला था, RR, relationship and result. Okay, these two things you have to focus. Personal life, relationships will bring joy, and professional life, the results will bring joy. So this is the main conclusion of our time management thing session. Okay, कि आपने अभी तो जो भी सीखा है, this thing is possible only when you are in quadrant 2. Quadrant 2 में रहेंगे, then you can take care of your relationships also, and you will plan according to result. Result के हिसाब से मुझे मेरा प्लान करना है. ठीक है? So now if you have any questions you can ask, those who are online also, anything you have. Subhan Prabhu, Varun Prabhu, Subhrajyoti, Nishant, Neha.
देवाशीष को समझ में आया? ओके, क्वेश्चन. आपने जो नोबल लीडर का बताया, वीकनेस नहीं होता ऐसे नहीं होता, लेकिन इग्नोरेंस नहीं, या इग्नोरेंस होना ही नहीं चाहिए. Ignorance होना ही नहीं चाहिए. That is correct. Because we are already in this Kali Yuga, which is having maximum passion and ignorance only. हम क्या करते हैं, कभी भी लेजीनेस होता है ना, बॉडी डिजाइन लाइक दैट, ऑलवेज लेजी. तो आप ऑलरेडी आप इग्नोरेंस में ही हैं. सोने का मन करता है बार बार, लेजीनेस होता है, ऑल दिस इग्नोरेंस क्वालिटी. दैट्स व्हाई नोबल लीडर विल नॉट केयर फॉर दैट. ओके. अभी प्रभुपाद थे तो ही यूज्ड टू sleep only 2 hours a day. He used to translate the scriptures from Sanskrit to English, so that the English speaking community will also come to know about it. That much enthusiastic at the age of 70. We cannot do it. Yahoo ke CEO she said in interview that she's sleeping only 4 hours at night. That is too much passionate. Okay, not that much also means I'm saying that ignorance already is there, so no need of ignorance. Ignorance मतलब क्या अभी somebody will tell okay आप अच्छा चीज करो, और नहीं बाद में करूंगा यार, हाँ मन नहीं लग रहा है करने में, बुक लेके बैठे अभी नहीं पढ़ाई करूंगा, जब अच्छा माइंड आएगा तब पढ़ाई करूंगा, something like that. Okay. सात्विक लाइफ जाना बेटर है कि राज ऋषि? Sattvic life is good, but Raj Rishi is actually better life. Raj Rishi means you will be having a leadership based of life. Okay. So as a student, as the life में progress करना है तो राज ऋषि. So means because you should not be like नहीं कि मैं only passionate ही रहूँगा, not like that. You should be controlled. You should have control over your passion. Okay, I'll study every day 3 hours minimum. I'll study every day nicely. At the same time, I will do my other activities also. I will sometimes I'll read some Bhagavad Gita every day. I'll take that knowledge, or I will interact with family members also. ऐसा नहीं कि कोई coding contest रहता है तो उसी में चले जाते हैं. Some people are like that, और बहुत ही workaholic होते हैं, not like that. Raj Rishi is the best for if you want to become a leader. That is the best one. Otherwise, Sattvic is also very good. Okay. Any other questions? Anyone? मुझे लाइफ से क्या चाहिए उसको डिपेंड. हाँ, पर उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा. ओके. बहुत लोगों को लाइफ से रॉन्ग चीज भी चाहिए होता है ना. तो you will first come to know when you come in goodness. पहले आप goodness में आएंगे, then you will be able to make right decisions कि मुझे क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है. Goodness में will make correct decisions, and then you will come. Then you progress further. Goodness और Raj Rishi का lifestyle. Yes, others online. Any questions? Not from my side. Okay. आपको समझ में आया निशान? Yes, प्रभु. Okay. प्रभु मेरे को ये पूरा स्लाइड चाहिए. स्लाइड्स चाहिए क्या? हाँ. ओके. ठीक है, आप आइए यहाँ पर. ओके. अभी. ओके प्रभु, आ जाओ. Okay. Madam is also there with us, so if you would like to add something onto it, Prabhu, you can add. Okay, sir, we'll end over here. Okay. If you don't have any questions. ठीक है.
So I'll answer that personally. Yeah? So we'll meet next Saturday, okay, with some very interesting topic again.